Okay girls, so now I am starting with the topic transpose of a matrix. What is a transpose of a matrix? Before reading the definition, let us look at an example. So transpose of a matrix is basically when we interchange rows and columns. What does it mean? Here this is a matrix with 1, minus 2 and 4 as first row and 0, 3, 1 as second row. So transpose when we will take, will change the rows into columns. So 1 minus 2 4, which was the first row, becomes the first column. 1 minus 2 4. 0 3 1, which was the second row, becomes the second column. 0 3 1. So rows have been interchanged to columns. So columns will automatically change to rows. See, 1 0 was the first column, it becomes row here. Minus 2 3 was the second column, it becomes second row. And 4 1 was the third column, it becomes the third row. So this was a matrix of order 2 by 3 and its transpose is a matrix of order 3 by 2. So it's very easy concept. We have to just interchange rows and columns. So we interchange rows, columns will themselves be interchanged. So similarly here you can see this is a row matrix and when we take its transpose it becomes a column matrix. This is another example. This is a column matrix and when we take its transpose it becomes a row matrix. So one more example, minus 1 4 minus 5 was the first row, minus 4 1 4 minus 5 becomes the first column. Similarly 2 minus 3 minus 2, 2 minus 3 minus 2, 1 5 minus 4, 1 5 minus 4. So this is a transpose of a matrix. So transpose of a matrix की कुछ प्रॉपर्टीज़ इन्होंने बताई हैं. We take transpose of the transpose means ये A था, ये इसका transpose था. अब आप फिर से इसका transpose लोगे तो you will get the matrix A again. Then transpose of the sum of the matrices is equal to the sum of the transpose of matrices taken individually. That is, when we add the two matrices and take their transpose, or first we take the transpose of the individual matrices and then add them, we'll get the same answer. Next is multiplication. When we multiply the two matrices and take its transpose, this will be equal to the product of B transpose into A transpose. This is known as reversal law. अभी हमने matrix multiplication नहीं किया है, so जब when we will do matrix multiplication, you will get to know that matrix multiplication is not commutative. That is AB may not be equal to BA. So for now you just remember that AB का जब हम transpose लेते हैं तो order change हो जाता है. पहले B का transpose आएगा और फिर A का transpose आएगा. And this we will do again when we will come to the matrix multiplication. Now there are some other types of matrices also which you have to remember. One is upper triangular matrix. Upper triangular matrix is one in which, see, 3 1 minus 2, this is the diagonal I told you earlier also. So this is known as principal diagonal. So upper triangular matrix is what? Principal diagonal, all the entries below the principal diagonal are 0. So you can see this becomes a triangle. So when you have entries in the upper part, upper triangular matrix. Similarly, if the entries above the principal diagonal are 0, that is you get a matrix in the lower part of the matrix. You get a triangle in the lower part of the matrix. So then it becomes the lower triangular matrix. So these are also you have to remember. Upper triangular matrix is one in which entries below the principal diagonal is 0 and lower triangular matrix is one in which the entries above the principal diagonal are 0. Now what is a symmetric matrix? So this is a matrix, you can see its transpose. Let us see. Minus 2 3 minus 4 minus 2 3 minus 4 3 1 0 3 1 0 minus 4 0 8 minus 4 0 8. So after taking the transpose, still the matrix is same. So A is equal to A transpose. So this, if any matrix satisfies this property that A is equal to A transpose, then that matrix is known as symmetric matrix. On the other hand, okay, they have given one more example. This is a matrix A. So when they have taken its transpose, it's still the same.
So it is a symmetric matrix. Next is skew symmetric matrix. So skew symmetric में क्या होता है, ये एक मैट्रिक्स है A, हमने इसका ट्रांसपोज लिया 0 -1 5 0 -1 5 1 0 -3 1 0 -3 -5 3 0 -5 3 0. You can see here this is a matrix A, this is its transpose, but they are not equal. 0 -5 1 5 0 1 -5. So you can see signs are different. So if I take a negative common from the whole matrix, so negative अगर मैं common लेती हूँ, मैट्रिक्स में जब भी कॉमन लेते हैं तो पूरी मैट्रिक्स में से लेते हैं. सो 0 1 -5 -1 0 3 5 -3 0, and now this new matrix after taking the minus common is A itself. So we are getting A transpose is equal to minus A, and hence A is a skew symmetric matrix. So skew symmetric matrix is one in which A transpose is equal to minus A. So next ये है, अच्छा एक और चीज़ आप याद रखोगे, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में डायगोनल एलिमेंट्स जो हैं दे आर ऑलवेज ज़ीरो in a skew symmetric matrix, but that doesn't mean that if all the diagonal elements are zero the matrix will be always a skew symmetric. No, it can be skew symmetric, it can be symmetric, it may not be, it may neither be symmetric nor skew symmetric, but agar skew symmetric hai to diagonal elements will be zero. Now next, this is also important property which you have to remember, that every matrix can be defined uniquely as the sum of symmetric and skew symmetric matrix. So let us see what does it mean. So let us consider a matrix A. This is a general 3 by 3 order matrix. So this is a general matrix. They have taken its transpose 2 1 3 2 1 3. Second column 3 5 2 becomes the second row 3 5 2. 4 8 1 4 8 1. Yes. So you can see 2 1 3 2 3 4. So A is not equal to A transpose. Neither A is equal to minus A transpose. Clearly जब elements equal ही नहीं है तो minus sign is not the only botheration here. So this was a general matrix which was neither symmetric nor skew symmetric. I have taken its transpose. Now let us add these two matrices. So when I add this A plus A transpose, I will be getting 4, yes, 2 plus 2 4, 3 plus 1 4, 4 plus 3 7. Yes, 1 plus 3 4, 5 plus 5 10, 8 plus 2 10, 3 plus 4 7, 2 plus 8 10, 1 plus 1 2. So you know corresponding elements को आपने ऐड करना होता है. Similarly मैंने A minus A transpose किया है. So A minus A transpose करोगे तो 2 minus 2 0, 3 minus 1 2, 4 minus 3 1, 1 minus 3 minus 2, 5 minus 5 0, 8 minus 2, 8 minus 2 6. 3 minus 4 minus 1, 2 minus 8 minus 6 and 1 minus 1 0. So आप इसका ट्रांसपोज लेके देखो. देखो इसकी फर्स्ट कॉलम क्या है 4 4 7. सो इट विल बिकम द फर्स्ट रो 4 4 7. सेकेंड कॉलम क्या है 4 10 10 एंड सेकेंड रो क्या है 4 10 10. थर्ड कॉलम क्या है 7 10 2. थर्ड रो क्या है 7 10 2. सो दिस इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स. सिमिलरली A माइनस A ट्रांसपोज. सो जब आप इसका ट्रांसपोज लोगे तो 0 minus 2 minus 1 0 2 1, 2 0 minus 6 minus 2 0 6, 1 6 0 minus 1 minus 6 0. सो यू कैन सी कि अगर मैं यहाँ से माइनस कॉमन ले लूँ तो वो फिर मैट्रिक्स इसका ट्रांसपोज इसी के नेगेटिव के इक्वल होगा. सो आप इसको करके देख सकते हो. इसको नेम दे दो name this matrix as P and then find P transpose. So you will see that P transpose is equal to P. Similarly, name this matrix as Q and then you will see that Q transpose will be equal to minus Q. Now, if I add this P and Q, this P and Q,
तो यू विल सी, देखो जब आप ऐड करोगे 4 then 6 then 8 then 4 minus 2 is 2, 10 and 10 minus 6 is 10 plus 6 is 16, 7 minus 1 is 6, 10 minus 6 is 4, 2 plus 2 is 4. सो इस पूरे से 2 कॉमन लेंगे अगर, और यू कैन से कि अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ, सो दीज 2 आर इक्वल. So P plus Q is equal to 2A. We get P plus Q is equal to 2A. So यही यहाँ पे बोला था, hence every matrix can be defined uniquely as the sum of a symmetric and a skew symmetric matrix. So आप further इसके यहाँ पे लिख सकते हो, A can be written as half P plus Q. So any general matrix can be written as sum of a symmetric and a skew symmetric matrix. एंड यूनिकली वर्ड इसलिए है यहाँ पे कि ये जो P और Q की वैल्यूज़ होंगी ये यूनिक होती हैं, मतलब आप A प्लस ए ट्रांसपोज करोगे तो यही आएगा, इसके अलावा कुछ और नहीं आ सकता. नेक्स्ट इज सब मैट्रिक्स ऑफ अ मैट्रिक्स. वेरी इजी, आप इसके कोई भी एलिमेंट्स को लेके लिख सकते हो. 2 3 -1 0 एक सब मैट्रिक्स हो गई, 0 5 8 9 एक सब मैट्रिक्स हो गई. ऐसी इसकी एक हम सब मैट्रिक्स बना सकते हैं. 2 3 4 6 8 9, this will also be a sub matrix, or you can make 2 4 -1 5. So these are all sub matrices. So any matrix which is obtained by deleting some rows or columns or both from a given matrix of order mn A is known as the sub matrix of A. इसका जो ऑर्डर है वो इसका, जैसे ये 3/3 ऑर्डर की मैट्रिक्स है, तो जो सब मैट्रिसेस हैं वो इससे कम ऑर्डर की ही होंगी. देन ट्रेस ऑफ अ मैट्रिक्स इज सम ऑफ द डायगोनल एलिमेंट्स. सो इस मैट्रिक्स का ट्रेस क्या होगा? 2 + 9 11. इस मैट्रिक्स का ट्रेस क्या होगा? 2 + 5 + 1 दैट इज 8. सो सम ऑफ द डायगोनल एलिमेंट्स इज कॉल्ड द ट्रेस ऑफ अ मैट्रिक्स. देन इक्वल मैट्रिसेस मैंने आपको बताया था व्हेन ऑर्डर इज सेम एज वेल एज ऑल द एलिमेंट्स आर ऑल्सो सेम. Whereas in equivalent matrices order must be same, elements may vary. So ये exercise मैंने पहले भी आपको कहा था, ये आपने कर ली होगी hopefully. So now 5th and 6th questions you can do. This is matrix A, this is B. You have to find A plus B का transpose. So you have to simply add these matrices and जो answer आएगा आपको उसका transpose लेना है. Second में given A and B you have to verify this. सो क्या करोगे आप? यहाँ पे पहले ए का ट्रांसपोज लोगे, फिर बी का ट्रांसपोज लोगे और दोनों को ऐड करोगे. यू विल गेट द लेफ्ट हैंड साइड, एंड फॉर द राइट हैंड साइड फर्स्ट यू विल ऐड दीज टू एंड देन दे टेक देयर ट्रांसपोज. सो राइट हैंड साइड शुड बी इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड. नेक्स्ट इज मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स बाय अ स्केलर. स्केलर क्या होता है कि जब भी हम मैट्रिक्स को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, सो हम ऑलवेज रिमेंबर वेन एवर वी मल्टीप्लाई एनी स्केलर, सो दिस स्केलर गेट्स मल्टीप्लाइड बाय each element of the matrix. See, so this is 6 times 1 0 minus 2 will be 6 1 is 6 0 and minus 12. So whenever you multiply any number, that number is multiplied to every element of the matrix. So they are just trivial properties, you can read them. This is if A is equal to this, B is equal to this, prove that 2 times A plus B is equal to 2A plus 2B. So prove that के लिए right hand side, पहले left hand side देखते हैं. ये A है और ये B है. You know how to multiply them, so they have multiplied A plus B, sorry, you know how to add them. So they have added A plus B and then multiplied this by 2. So when you will multiply by 2, each element of the matrix will be multiplied. Now for the right hand side, firstly multiply A by 2, so 2A you are getting, then 2B, and then you are adding these two matrices, so you will see that answer is same. Similarly, next part, 5 times A minus B is equal to 5A minus 5B. So again इसमें क्या करोगे? पहले इन दोनों को subtract करोगे, फिर 5 से multiply करोगे, and this the answer will be equal to 5 times आप इसको multiply करो, 5 times इसको multiply करो, and then subtract it. So you will get the same answer. See,
सो पहले a माइनस बी करके 5 से मल्टीप्लाई किया है, दूसरे केस में पहले a को 5 से मल्टीप्लाई, b को 5 से मल्टीप्लाई और फिर माइनस किया है. सो आंसर इज़ द सेम. नेक्स्ट इज़ a प्लस 2 टाइम्स कैपिटल A इज इक्वल टू a टाइम्स a प्लस 2a. व्हाट इज़ दिस? वी हैव टू प्रूव दिस. सो a प्लस 2 टाइम्स a जब करेंगे तो a प्लस 2 को आप हर एक एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करोगे, तो ये इन्होंने सारे एलिमेंट्स के साथ मल्टीप्लाई कर दिया. सो ये बन गया 2a प्लस 4, 7a प्लस 14, 8a प्लस 16, 5a प्लस 10, 4a प्लस 8, 3a प्लस 6. सो दिस वॉज द लेफ्ट हैंड साइड. फॉर द राइट हैंड साइड जो a मैट्रिक्स गिवन है हमें, उसको पहले स्मॉल a से मल्टीप्लाई किया है और फिर 2 से मल्टीप्लाई किया है और फिर दोनों को ऐड किया है. सो अगेन यू कैन सी आंसर इज सेम. नेक्स्ट में 2 टाइम्स a इज इक्वल टू 2a टाइम्स a. सो हम पहले a मैट्रिक्स को पहले a से मल्टीप्लाई करें और फिर जो आंसर आएगा उसको 2 से मल्टीप्लाई करें. दिस इज़ द लेफ्ट हैंड साइड. एंड फॉर द राइट हैंड साइड मैट्रिक्स A को इटसेल्फ 2a से सीधा मल्टीप्लाई कर दें. सो आंसर इज सेम. सो दे आर ट्रिवियल रिजल्ट्स, ऑलरेडी यू नो दैम. मोस्ट ऑफ द रिजल्ट्स आपको पता है ये. सो एक बार आप फिर भी एग्जांपल्स करके देख लेना.